the knowledge partner for this entire festival. The Vitasta Festival, as I said, is part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and the vision for Vitasta was to celebrate the best of Kashmir, to place Kashmir on the Buddhist circuit of India, to socialize the idea of best of Kashmir with the concept of Ek Bharat Shreshta Bharat, and also to connect the events in each state with the theme of water and sustainability through a river connect. This was the vision of this Vitasta, and we did achieve it. And Ek Bharat, we found out so many similarities between Kashmir and Tamil Nadu in this particular event. We had a presentation of the Vanpatar along with the Terukutu, which was very beautifully integrated. I was told the artists did not have to even speak the language, but they understood what each one was going to present, and it was a beautiful presentation. We also had a presentation of On the Vitasta River in Villupattu, which was in Tamil. We had a camp of painting, a painting camp, which was done by the Lalit Kala Academy, and we had about 8 artists from Kashmir. They're all seated here, so 8 painters from Kashmir who were painting the concepts of an integration between Kashmir and Tamil Nadu, and 7 artists from Tamil Nadu and Pondicherry who are also there. They're all here. They may just stand up and do the Kashmir artists also. These are all the painters and artists who are here there. There were 15 of them with the Lalit Kala Academy who did this painting. And we also had the Additional Secretary of Jammu and Kashmir with us for all the programs. He is the Additional Secretary of Culture, Jammu and Kashmir. So we are very happy to have him here through the festival. And we really thank, and the Lieutenant Governor of Kashmir was also present there on the second day of the festival. So we were very, very happy and privileged. I think Kalakshetra was privileged to host this wonderful festival of Vitasta, where we spoke about the culture of Kashmir, the seat of all learning for the entire Bharat. And it was an eye-opener for each and every one of us. And today I'm filled with emotion and overwhelmed at that these artists are now going back. We had a wonderful time with one and all of them. I thank all of them for their lovely performances, enjoyed every moment of it, the Gojari, the Rof, and then the Bhanpatar, the Kood, and also we had Damali and the Bhanpatar, I said. Yeah, I think I hope I've not left out any. Rofa. Yes. I thank Mr. Siddharth Kar and the Ministry of Culture, our Secretary, Sri Govind Mohan Sir, and yesterday our Honorable Minister, Sri Kishan Reddy, was also here. I also thank the Tourism Department for having put up a stall on Kashmir, for Kashmiri food, and we had Mr. Sanjay Raina there who was giving us lovely Kashmiri cuisine. We thank him, and it was a wonderful confluence of the Kashmir culture at Kalakshetra. The records also were done so that we could bring in Kashmir. The Chinnar leaf, the record was done. And so I thank all of them, and I thank the Ministry of Culture and our Joint Secretary Uma Nanduri for bringing this to Chennai and Tamil Nadu. Thank you one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Let us now relive the Surabhi moments, reminiscence of nostalgic era with our Siddharth Kar, knowledge partner with us, sir. Sir, we are here awaiting to listen to the Surabhi. बहुत 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 शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहूं कि गवर्नर साहब और मैडम गवर्नर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सच बात यह है, अगर आप पूछें कि ये फंक्शन कोई ऐसी कुछ खास जरूरी नहीं थी, ये इनके इनिशिएटिव पे हुआ है, इनका बहुत बड़ा दिल है, और ये हमें बताता है कि हम जहां यहां तमिलनाडु आए हैं, ये ऐसे बाबू एक और फेस्टिवल नहीं है, ये कुछ एक जीवित आत्मा है जो हम लाए हैं अपने देश की यहाँ पे। तो बहुत बहुत मुबारक आप सबको, क्योंकि हम सब जो हैं इसी एक भारत के हम एक हिस्सा हैं। और किसी ने बहुत अच्छा कहा कुछ दिन पहले कि जो सिंबल है, जो स्कीम है, जिसे कहते हैं, स्लोगन है, एक भारत
श्रेष्ठ भारत, उन्होंने कहा एक ही भारत है श्रेष्ठ भारत। तो यही है, एक भारत ही श्रेष्ठ भारत है। तो मैं समझता हूँ यही चीज है। और आपने कहा सुरभि के दिनों को ताजा करें, करीबन ऐसा ही होता था, क्योंकि सुरभि की यात्रा जो थी वो ये नहीं थी कि हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और सुना रहे हैं, हम ही खुद सीख रहे थे, हम ही खुद समझ रहे थे। साथ में देश के जो भी परंपरा थी की धारा, उसमें भी हम अपनी डुबकी लगा के सुन रहे थे, समझ रहे थे, पेश कर रहे थे जो हम सुन रहे थे। तो आज मुझे ऐसे ही लग रहा है कि हमने जो सब कुछ किया और आपने दोबारा मेरे मन में जो बहुत सारी खूबसूरत चीजें जो है आपने फिर से उजागर की कि जब इंसान सीखता है तो वो बड़ी खुशी से काम करता है और बड़ी इट्स अ मैटर ऑफ जॉय एंड एक्सटेसी दैट वी आर ऑल टुगेदर इन दिस वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर एंड लाइफ ऑफ इंडिया। और वो क्यों? क्योंकि हम सिर्फ यही नहीं देख रहे हैं कि एक प्रदर्शनी हो रही है कि कश्मीर जो है यहां पे चेन्नई में आ रहा है और अपनी इवेंट दिखा रहा है, जो आप कह रहे हैं। एक्चुअली तमिलनाडु भी अपनी संस्कृति हमें दिखा रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि हम अपने कश्मीर के लोग, मैं भी कश्मीरी हूं, तो हम भी सीख के वापस कुछ जा रहे हैं कि भाई ये क्या है। मेरी उम्मीद है कि जहां भी हम देश में जाएं, सिखाएं और सीखें, और ये इसका मकसद है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की और अपने गवर्नर साहब की और इतनी तमिलनाडु गवर्नमेंट की कि ये मौका मिला है एक दूसरे से भाईचारे में संपर्क करना। सच बात यही है, ये भारत आपका ही भारत है और ये आप बता रहे हैं कि ये भारत में कितने विभिन्न विभिन्न पहलू हैं, रंग हैं और खूबसूरती है। आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी। और ये यात्रा, और भी मैं खुश हूं कि ये यात्रा चल रही है, जैसे वितस्ता निरंतर बहती है, ये यात्रा तो हमारी निरंतर रहेगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Thank you so much. Now I request the Honorable Governor to deliver the presidential address. वणकम, नमस्कार। श्री सिद्धार्थ पाक, डॉक्टर रेवती रामचंद्रन, एंड हमारे ऑल आवर different from different cultural bodies like Vidya Bhavan, Krishna Gan Sabha, Braham Gan Sabha, Tyagraj Braham Sabha, और जितने भी all these different bodies, their representatives, the leaders are here, distinguished artists, musicians of Tamil Nadu are here, and my dear friends from Jammu and Kashmir. मेरे सबसे पहले मैं अपने कश्मीर से आए हुए अपने भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप यहां आए और पिछले 4-5 दिनों में आपने चेन्नई का रंग बदल दिया। हमें यहाँ पर ये कश्मीर दुर्भाग्यवश पिछले लगभग 30-32 सालों से कुछ इस दौर से गुजरा कि देश के अन्य लोगों को वहां जाकर वहां कश्मीर को देखने का, समझने का, वहां का आनंद लेने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला। हालांकि अब फिर शुरुआत हो गई है, एक नई शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी
आप वहां से आए और यहाँ के लोगों को, हमारे लोगों को आपने कश्मीर के बारे में बताया, कश्मीर की आर्ट, कश्मीर की कल्चर, कश्मीर की म्यूजिक एंड डांस कितने समृद्ध है, कितने रिच है. यू केम हियर ऑल द वे एंड told our people, showed to our people how rich is the cultural, artistic history and heritage of Jammu and Kashmir. मैं तो ये उस शख्स की उस सोच को मैं सलाम करता हूं जिसने ये जो अमृत महोत्सव की कल्पना की. आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के महोत्सव तो होते गए. हमने गोल्डन जुबली मनाई, सिल्वर जुबली पहले मनाए, गोल्डन जुबली मनाई, और भी जुबलियां मनाते, लेकिन एक अमृत महोत्सव करके शुरुआत करना, ये बड़ी क्रांतिकारी सोच थी. इट्स ए रिवोल्यूशनरी थॉट एंड आई सैल्यूट द माइंड विच थॉट ऑफ इट, आवर नेशनल लीडर, टू थिंक ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव. इट्स नॉट समथिंग विच इज जस्ट एन इवेंट. जैसे कुछ लोगों ने कहा और हम जानते हैं, इट्स रीडिस्कवरी एंड रीबर्थ ऑफ भारत. ये एक पूरा दौर है जिसमें हम भारत को समझ रहे हैं और एक नए भारत का उदय हो रहा है, वो जन्म हो रहा है. कश्मीर से मेरा एसोसिएशन उन दिनों का भी था जब कश्मीर के बारे में जब हम सुनते थे कि ये जमीन पर, उसको धरती पर स्वर्ग कहा जाता था. गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त. ये अमीर खुसरो की ये बात, अगर कहीं हेवन है, स्वर्ग है धरती तो यही है, यही है, यही है. वो दौर था जब मैंने 80 के शुरुआत में, 1980 के शुरुआत में मैं जब कश्मीर गया था, वो एक दौर था. कितनी खुशियां थी चारों तरफ, लोग, पीपल वर सो हैप्पी ऑल अराउंड. और दूसरा दौर जब मैं 90 की शुरुआत में, द बिगिनिंग ऑफ 90s decade, when I was there for almost more than 5 years, I was based in Srinagar. वो भी क्या दौर था. चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ खून खराबा, दहशतगर्दी, ऑल अराउंड, पीपल ब्लडशेड. ऐसा हो गया था कि हम गुपकार रोड पर रहते थे. सारे लोग छोड़ के भाग गए थे, जितने भी पॉलिटिशियन थे, जितने भी ऑल दीज ministers, everyone had run away. The nearest place they were there was Delhi. Some of them had gone to London and they were living there. So we were so much used to gun firing, grenade firing. From the sound we could make it citizen which kind of weapon is being fired. Many a times my own car, and I must tell you, whenever I had an official formal, I used to take a bulletproof car that was given. But for most of my work, I was in an organization where I was nobody in the sense that I was a big intelligence. I had a Maruti 800, nothing, one Kashmiri driver, myself. I could go anywhere, whichever place I wish I could go, and wonderful experience. But with my bulletproof car, it came across at least 5 ambushes. Where the burst fired, it got lost into my car. And many a times, there was one occasion when there is a corps headquarters, so there is a corps commander. Corps commander had invited me for one dinner. I said, okay, I'll come. And right at the time when I was to leave, the firing began in front of my house. We waited, we were getting late, we were looking at the watch, कि लेट हो रहा है, क्या करें. मेरा ड्राइवर कश्मीरी है, कहता है जनाब ये तो एक ही फायरिंग है, अपनी गाड़ी बीती है, चलते हैं इसमें.
इट इज ओनली AK-47 फायरिंग। व्हाट इज दिस? मैंने कहा चलो चलते हैं। हम गाड़ी में बैठ गए, चले। 2 बर्स हमारी गाड़ी में आए, हम निकलते चले गए, गाड़ी हमारी मूव की, कोई बात नहीं है। आई अटेंडेड एंड एक दौर था गजब की। शुरू में जब यह दहशतगर्दी वहां शुरू हुई, दहशतगर्दी टेररिज्म को बोलते हैं, तो उस समय लोग यही कहते थे कश्मीर में यह संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल इन कश्मीर बिकॉज पीपल ऑफ कश्मीर आर सो पीस लविंग, सो फाइन, सो गुड एट हार्ट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी वायलेंस बीइंग ब्रॉट। और सब शुरू के दिनों में हम सब यही मान के चल रहे थे कि यह थोड़े दिनों की बात है, इट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल। एंड परहैप्स इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट थिंकिंग that when the terrorists started targeting Kashmiri Pandits in a most brutal manner, and they started running for safety, even government of the time, they also assisted in letting them move, thinking that it will not last long, they will come back. And over 100,000, I mean, so many of Kashmiri Pandits had to vacate. In a most imagine their life living. You cannot imagine. I'm asking you to imagine, but it's not possible for you to imagine. Suddenly, a person who is well, happy, living with the family, everything, for generations, several hundreds and hundreds of years, and suddenly they have to wind up and move fast and go and live in a small tent where there is no facility, no toilet, no medicine. If you fall sick, the food. Imagine. You cannot. It's just beyond imagination. You cannot experience that. It's all. Unfortunately, it continued. And continued, इसके पीछे हमारी भी गलती थी। हमने भी क्लैरिटी के साथ, we also did not approach it with clarity. हो क्या रहा है? It was not Kashmiris who were fighting. It was essentially Pakistan who was fighting. शुरू के दिनों में all this except थोड़े बहुत थे बच्चे यहां के थे, बट मोस्ट ऑफ दिन। लेकिन कश्मीर को इस दौर से, इतने लंबे दौर से गुजरना पड़ा, और कितने लोग कितने परिवार बर्बाद हो गए। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस में जब पता चलता था कि उस पर्टिकुलर इलाके में दहशतगर्दों का एक टीम है, टेररिस्ट, ग्रुप ऑफ टेररिस्ट आर नाउ इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड देन द सिक्योरिटी फोर्स विल सेंड अ टीम, दे विल सेंड अ प्लाटून अबाउट 25 to 30 people, and after dispatching them, the commander used to see tears in their eyes because he used to say half of them will not come back. That was the situation, and that used to happen. A team of 25, 30 going, 12, 14 would come back, the rest would be the bodies. That is how it was. चलो लंबी दौड़ हो गई, there comes up. Now we see the beginning of change, a new change. पहले हमारी समस्या थी कि हम सही पहचान नहीं कर पा रहे थे कि दुश्मन कौन है। हम कहते थे हमारे बच्चे हैं, ठीक है हमारे बच्चे हैं, लेकिन आपका शरीर का कोई सेल अगर कैंसरस हो जाए तो क्या करोगे? उसको पाल कर रखोगे? इफ ए सेल ऑफ योर बॉडी टर्न्स कैंसरस, यू कांट से इट इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो यू मस्ट नरिश इट. You have to put through radiotherapy, chemotherapy to kill it. That's the only way. You can't allow this thing to go on. In the name of this ambivalence, Pakistan was allowed to play this game for such a long time. And who was suffered? Kashmiri was suffered. The first time when Pakistan did was 1947, and some of the elderly people here might recall. Of course, all of you must be a small kid at the time. I was not born. I was born only 3 years later, 3 or 4 years later. But I have read in the book. I have heard at the time, when I was in Kashmir, I used to visit at the time in 90s and all, people used to tell the tale. How that those Pakistanis who came, what kind of atrocities they committed on Kashmiris. They destroyed. They destroyed. लेकिन हमारी समस्या क्या थी?
कि वी ऑल्सो डिड नॉट अप्रिशिएट, वी डिडंट अंडरस्टैंड। मुझे याद है जब अर्ली 90s में जब एक बार मैं कुपवारा के एक विलेज में गया हुआ था, वहां हमारे एक फ्रेंड, उसने मुझे एक बात कही, मुझे एक शेर सुनाया। कहा कि आप लोग दिल्ली वाले, आप लोग समझ नहीं रहे हो। उसने कहा, ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की न मैदानम। हमारे यार की जुबान तुर्की है लेकिन मुझे तुर्की नहीं आती। आप मेरे यार हो लेकिन मेरी जुबान समझ नहीं रहे हो। यू आर माई यार फ्रेंड, यू आर माई लवर, यू आर but you don't understand, we don't understand. There is so much of communication gap between us and Delhi. You don't understand what you are doing. It was true. For a very, very long time we didn't understand and we kept playing. We kept hosting, cajoling all those terrorists and those who were supporting the terrorists in the garb of a politician. They were enemies of the nation, enemies of the Kashmiri people. Because they were people enjoyed the high positions, they were given so much all the time respect. In 2019, the fundamental cure treatment was done as surgery, needed surgery. 370 abolished, Union territory brought. Otherwise, imagine the Jamaati Islamic fellows. Initially, people don't know Kashmir will never accept Jamaati, but look at this, they infiltrated so much all around. Whether in schools, the teachers were Jamaatis, they were teaching, even police force. You know, it has started. Over the period of time, we kept sitting in Delhi, kept talking about issues which are not very relevant, sometime to Pakistan, sometime to Hurriyat, sometime to leaders of political parties, those who were actually in hand in glove with them. And Kashmiris kept suffering. Now with this change, we see that things are changing fast. बदल रहा है कश्मीर भी अपनी नई जिंदगी, पुराने जो उसके अंदाज थे, पुरानी पहचान थी, वो वापस आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे मालूम हुआ कि जब मैं तो इनॉग्रेशन में आया ही था, मैंने मालूम किया कि ये लोग कब जा रहे हैं, क्योंकि हर दिन आपका कोई ना कोई परफॉर्मेंस होता है। मैंने कहा मैं उनको चाहता हूँ होस्ट करना, एक दिन राजभवन में आए, चाय तो पिए यार उनके साथ। इतनी दूर से आए हैं, तमिलनाडु आए, हमारे स्टेट में, कम से कम लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। मैंने वो टोल्ड कि चलो आज शायद मिल जाए। तो थैंक्स टू डायरेक्टर रेपी रामचंद्रन, वी कुड गेट योर टाइम टुडे। लेकिन मेरा फिर भी एक गिला है कि आप इतने दिनों से आए, चेन्नई में रहे, चेन्नई में आपने परफॉर्मेंस भी किए, चेन्नई के लोगों का दिल भी जीता, लेकिन आपको चेन्नई के बाहर तमिलनाडु में इतनी सारी चीजें हैं देखने की, सीखने की, वो मौका आपको नहीं मिला। मैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर से गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई ट्रुप आती है तो उसको कुछ टाइम रखें, ताकि ये कुछ उस जगह पर, जिस जगह पर जा रहे हैं, जिस राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य के कुछ आर्ट एंड कल्चर से फेमिलियराइज हो, उसको घूमें, देखें, ऐसा होना चाहिए। I will request, I will urge the Ministry of Culture, and I will definitely, I'm going to write to the Minister of Culture, कि your present tight schedule, you go, perform and pack and go. No, that is not the way. If you have come, you have shown us something, we also must show you something. And that should be the case. That is how it should be. आपको, मेरे कश्मीर भाई बहनों को, कश्मीर से आए हुए भाई बहनों को बताऊंगा कि तमिलनाडु की आर्ट और कल्चर काफी रिच है, बहुत है। एक महीना तो ऐसा होता है जिसको मारगड़ी क्या कहते हैं, दिसंबर और मिडल ऑफ जनवरी तक चेन्नई का रंग बदल जाता है। हर जगह जितने भी गांव सभा के लोग बैठे हुए हैं, तरह तरह के परफॉर्मेंस होते हैं। हो सकता है मैं ये तो ऐसे तो आप कर्नाटिक म्यूजिक का करते हो, ऐसे मैंने भवन से ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रखा है, आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड भवन
to get something for the Northeast to try, because sometimes they will say governor is keep asking us to do all kinds of things. But I'll suggest we can also consider during our next Margadi inviting some troops from Kashmir to perform. You know, we have seen how, I was there in the inaugural enchanting performance. Oh my God. What a symphony played. That was something which was, we lost sense of time. पता नहीं चला कैसे समझा. So I think let us keep this alive. और जैसा कि सिद्धार्थ काक साहब ने कहा कि ये तो शुरुआत है, ये तो जर्नी की शुरुआत है, ये कोई समापन थोड़े है. आज आप जा रहे हो, लेकिन एक बड़ी मीठी याद छोड़ के जा रहे हो, और हम चाहेंगे कि आप फिर आए और आपको जरूर बुलाएंगे. और मैं कश्मीर सरकार से भी निवेदन करूंगा. आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट देम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज समथिंग वेयर वी विल बी एबल टू सेंड सम आर्टिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु टू परफॉर्म देयर. आप लोग आपकी यहाँ के जो नेक्स्ट जर्नी है जो आप जा रहे हो, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को लंबी दौड़ करनी है. कई एक जगहों से होकर आपको जाना है, कई एक जगह भारत के कई एक जगहों पर आपको जाकर परफॉर्मेंस देनी है. मैं आपकी आगे की यात्रा सफल हो, सुखद हो. आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी ऑनवर्ड जर्नी फॉरवर्ड. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. Let's all have a cup of tea together. Thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request the Deputy Secretary to the Governor and Controller to deliver the words of thanks. Ladies and gentlemen, I request you to kindly remain seated. Good evening, one and all. It is my privilege and honor to extend vote of thanks on behalf of Raj Bhavan in this beautiful cultural evening. So I extend our warmest regards and highest gratitude to our Honorable Governor, who is always instrumental for arranging this kind of cultural exchange program as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and gracefully